in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on 75th Independence Day. Esteemed Chairman Sir, Honorable Principal Ma'am, prestigious guests, respected and devoted parents, benevolent teachers, and dear school fellows. Today, we all have gathered here to mark the landmark of success by celebrating the 75th Independence Day of our beloved country. So, I, Dolly, and my friend Divyansh of Class 8 from the core of our hearts welcome you all to today's function on the behalf of entire KMS family. A really warm welcome to our chief guest, Mr. Vijay Sampla. Mr. Vijay Sampla needs no introduction, as his dedication towards his nation speaks for itself. He began his political career in 1991 and worked with a lot of dedication towards the betterment of humanity. He joined politics in 1997 and was elected the Sarpanch of Sophie Pind in Jalandhar, Punjab in the following year, and then the president of BJP Jalandhar, Kant Mandal the same year. This itself speaks the volumes about the zeal and hard work he must have put in. He was served as the chairman of Khadi and Village Industries Board of Punjab. He was also the chairman of Forest Development Corporation of Punjab in the year 2013. In the year 2014, he took oath as the Minister of State for Social Justice and Empowerment. And then, in 2016, he was declared the State President of BJP Punjab. He has tirelessly worked for many NGOs in various capacities. He is the chairman of Punjab Dalit Vikas Parishad, the state coordinator of Anusachit Jati Arakshan Bachao Manch, and also the chairman of Bharat Gaurav. For his diligent and conscientious work for Khadi and village industries, his name was recommended for Rashtrapati Award by the chairman of Khadi Commission of India. A simple man who is devoted to Swadeshi ideology and adopts Swadeshi as much as possible. Mr. Vijay Sampla leads his life inspired by Dr. B.R. Ambedkar's quote, "Life should be great rather than long." We welcome you, sir. Freedom should not be something you have to deserve. It's something you just naturally have. Something that no one can take away from you. We struggled for our independence and worked tirelessly and selflessly under the guidance of our many freedom leaders. The ultimate aim of them was to drive out the Britishers from the country. And on 15th August 1947, the long-awaited dream came true. To relive the moment and to enjoy the spirit of freedom and independence, we celebrate Independence Day. Another reason is to remember the sacrifices and lives we lost in the struggle. Besides, we celebrate it to remind us that the freedom that we enjoy is earned the hard way. The 75th Independence Day might not be witnessing the heavy drum rolls and march paths in schools. There might not be assemblies with sweets and students. However, the tricolor will be hosted and the fights and sacrifices of Indians to attain independence will be remembered. The pandemic has just moved the celebrations online, and for making the celebrations possible in this situation too, we have only one person to thank, and that is our revered chairman, Sir Dr. Ved Prakash Tandon. He is a person of determination and a person of high values, who with his kindness and generosity has unlocked the treasure of knowledge and education for the youth of our society. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. Now I take immense pleasure in requesting Sir to hoist the tricolor.
1,000 miles begins with a single step, but that single step is the most difficult one to make. Conquer the fear and venture forth, and we realize that we are born with wings. Independence Day represents the true spirit, courage and sacrifices made by countless men and women in the past. So let's get ready for a whirlwind of joy and excitement, because dance is, in my opinion, one of the holiest art forms, as it allows us to express our thoughts and emotions without having to speak. We all have a special affinity towards our cultural tradition. Our ancestors used different forms of art to tell a story and convey feelings. So how about a cinematic dance performance to portray that we need to keep on moving ahead in spite of all hurdles and obstacles in life, just like our freedom fighters did for more than 200 years to become independent. Thus, without further ado, let's prepare ourselves for a spectacular semi-classical dance performance by the students of 6th, 7th and 8th. रुके ना तू, थके ना तू, धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू, सदा चले थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू. That was really incredible work of the students of 6th, 7th and 8th. An independent India is the result of some 200 years of struggle for freedom from the British Raj. This period saw a number of notable personalities who sacrificed their lives in rescuing our motherland from the clutches of Britishers. For every Indian in those days, that was indeed a Herculean task to fight against the mighty Britishers. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. People who were born after independence are likely to take this freedom for granted. And so, we celebrate this day each year to remind us of the value of our independence.
India, as we all know, is a land of endless freedom fighters. Many are known and even more are unknown. Our freedom fighters bore so much pain and sufferings to save India as they kept their love for motherland above everything else. Some of the freedom fighters were revolutionary and some used non-violence as a weapon against the British rule. चलो मित्रों, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में भी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्त की खून की वो धारा पार कर लें। Now brace yourself for a high-octane dose of entertainment by the blooming birds of class 1 and 2 with a skit on freedom fighters. नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। बेटा मुझे यहाँ चक्कर काटते हुए पूरे 5 महीने हो गए हैं, पर मेरी मेंशन की फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। अंकल जी, चक्कर काटने का कुछ फायदा नहीं, आपको कितनी बार समझाया। बेटा, चक्कर काटे बिना मेरा काम कैसे होगा? अंकल जी, आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग चलो। मतलब आप बड़े भोले हैं, मेरे भोले भाले अंकल पैसा बोलता, पैसा चढ़ाओ, फाइल आगे बढ़ाओ। बेटा, पैसा होता तो मैं यहाँ चक्कर क्यों काटता? यह भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे का देश है। फिर तो मेरे मंगल पांडे घर बैठो घर। बेटा, आज के समय में हमारे देश के लोगों को क्या हो गया है? किसी की मदद भी पैसों की मोहताज हो गई है। हमारा देश तो वीरों और बलिदानों का देश है। अंकल यार अंकल, क्या वीरों का देश का राज सुना रहे हो? लगता है तुम जलियांवाले बाग का किस्सा भूल गए। वह साखी का दिन था। ओ करछी दा बना लेना डगा ते चमचे दी तिली लावांगे। ओ सी दातियां वाले वीर हां सारे, पर बंदूक दी बोली पावांगे। आई वसाखी सोहणिया तू पट दे भरथू, ओ आई वसाखी सोहणिया तू पट दे भरथू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू, ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज
चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ऐसे शहीदों का देश है मेरा। जी आपने तो मेरी अंतरात्मा को जगा दिया। हमारे देश के शहीद अपनी वतन की मिट्टी में मिल गए, सिर्फ हमें आजादी दिलाने के लिए। ये नहीं कि कार पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं। लड़ो तो अपने हित में लड़ो। जय हिंद, जय हिंद। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज़ाद होने का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए जान भी लुटा देंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। What a stupendous performance it was! A real tribute to all those who sacrificed their life to give us freedom. We are indeed very fortunate to have such great freedom fighters and revolutionaries in history, and they liberated not only the country but also the coming generations from the slavery of British. Freedom has its life in the hearts, the actions and the spirit of men, so it must be daily earned and refreshed. Else, like a flower cut from its life-giving roots, it will wither and die. Dandi March or the Salt Satyagrah was the first call for civil disobedience against the British Raj in the year 1930. The Dandi March that marked the golden moments of Indian history is on the way to be revived again by our Honorable Prime Minister through Amrit Mahotsav. Mahatma Gandhi said, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Taking us on this journey of Satyagrah, design is an effective substitute are the students of 9th and 10th with their presentation on Dandi March. From Sabarmati Ashram toward the small coastal village of Dandi, he marched against the state monopoly in manufacturing and selling of salt.
Gandhiji chose salt because it was used in every Indian household, yet people were not allowed to make salt even for domestic use. Parallel salt marches were conducted all over the country. Gandhiji, after reaching Dandi, broke the salt law by manufacturing salt. This led to the beginning of civil disobedience movement. Dandi March, which is also known as Salt March, was one of the finest examples of non-cooperation and non-violent movement led by Mahatma Gandhi against the British rulers in April 1930. Led by Gandhiji himself, the original march began with a group of 78 people on March 12 and reached Dandi on April 5, 1930. The march, which is culminated with Gandhiji himself making salt at the Dandi, energized the whole country. The country within the fold of independence struggle by opposing British laws which directly harmed the common people like prohibition on salt and levelling salt tax. The Dandi March led by Gandhiji led to the emergence of similar movements across the country challenging British authority. Dandi March is considered as one of the highest marks of Indian independence struggle. Gandhiji was credited for bringing common people together. Prime Minister launched the celebration of 75th year of independence by flagging commemorative Dandi March from Brown near Abhaygarh in Gujarat. The 21-day celebratory march is the first event of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which was being convened by the central government to celebrate India's independence from British colonial regime on August 15, 1947. Gujarat Minister State for Sports, Youth and Cultural Activities, Ishwaran Patel, was quoted as saying by the Indian Express that the children and the grandchildren of freedom fighters who participated in the original march will be honored by the government. However, the minister said that they will not be invited the participants in 386-kilometer journey due to health and age factors. To commemorate the original march, a set of 81 walkers will be participating in the Dandi March event. The Congress Party, whose members included almost all the freedom fighters including Gandhiji, celebrated the 75th anniversary of Dandi March in the year 2005. Sonia Gandhi, in her capacity as the President of Indian National Congress, had launched the movement on March 12, 2005. The 2005 march has also seen the participation of Gandhiji's great-grandson, Tushar Gandhi, who runs the Mumbai-based Mahatma Gandhi Foundation. Alongside the Dandi March, celebrity events will be converted at the 6 important locations associated with Gandhiji, the state namely Porbandar, Rajkot, Vadodara, Baradoli, Mandevi and That was really very thoughtful and reminded us of those days. Fantastic work by the students of 9 and 10. Friends, we all are aware that the national symbols of India paint a unique identity of the culture and nature of our country's sensibilities. Each symbol has been chosen carefully and depicts a certain virtue that is a distinctive feature of our multifaceted culture. The various facets of our heritage are very appropriately represented by these national symbols. They infuse a sense of pride and patriotism in the heart of every Indian. So, now the tiny tots of nursery and prep are going to represent these national symbols of India. The kids are dressed up as national symbols and will throw some light on what role these symbols play in Indian culture and history. So, get ready to find out what each of our national symbols stands for. Hi, I'm the tiger. I'm an animal of India. I belong to cat family, very fast animals. I live in the jungles. Symbolizing the power, strength, and kindness for the person. Thank you. Friends, I am Mango. I'm yellow in color. I am national fruit of India. I am king of I am Kanisha Yadav. I am Ashok Chakra. There are 94 spokes in the Ashok Chakra. The Ashok Chakra color is blue. In center of the flag is the green color of the sky and token.
24 spokes represent 24 rishis. Thank you. Hi everyone, my name is Shastra. I have become dolphin. I am the national athletic animal of India. I am queen of river. Okay, thank you. National bird of India. I represent the India colors. I am color. I love to dance in rain. Hello everyone. Do you know who am I? Yes, you are right. I am national flag. I am pink lotus. I am an aquatic flower. I also called Kamal in Hindi. I am the symbol of truth, peace, purity, and wealth. Beautiful flower. Thank you everyone. National sport hockey. Hockey is a national sport of India. It is a big window. Stick and ball. The hockey is a famous as cricket in India. Thank you. I am pumpkin. Pumpkin is the national vegetable of India. It is yellow and green color. It is very tasty and healthy. Thank you. I am a banana tree. I am a national tree of India. I am a very huge tree which expands over a very large area. I can live up to several hundred years. My name is Eva. I can become Tiranga. Tiranga is the national flag of India. It holds saffron color indicate the strength and pride of the country. White middle band indicate peace and goodwill. The red chakra, the pink color show the fertility, love and restriction of the land. I am the pride of my country. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Not only are we proud of our national symbols, but we are also proud of you children. Strong leadership is the foundation of school success, and for this, we have the best example here at KMS itself. She is no other than our beloved Principal Ma'am, Mrs. Vandana Tandon. Words cannot begin to describe how thankful we are for the work she does as our school principal. She is the glue that keeps KMS together. Her ability to empathize with our students and constant belief in the staff inspire us all to learn new things. Not to forget how amazing she is and how much of difference she has made in our lives. We would now request Principal Ma'am to extend the vote of thanks to all our guests and participants who took out time from their busy schedules to be a part of this program. Our Principal Ma'am, Mrs. Vandana Tandon. I would like to take this opportunity to welcome our esteemed guest, Shri Vijay Sapla ji, Chairman of National Commission for Scheduled Castes and former Minister of State for Social Justice and Empowerment in India. Our Chairman Sir, Shri Ved Tandon ji, our devoted parents, dedicated staff and adorable students on this special day. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आजादी कितनी महत्वपूर्ण होती है, अपना नभ, अपना गगन, अपनी खुशियां, आजादी की सांस, इन सभी को आज के दिन जी भर के महसूस किया जा सकता है। 15th August 1947 is the day embossed in the golden history of India. It is the day when India got its freedom from the 200 years of British rule. It was a hard and long non-violent struggle. The young mind is infused with a sense of patriotism and nationalistic feelings on the day. Freedom is a gift. It is the gift obtained after many sacrifices, passing sleepless nights, bearing brutal tortures and struggles by our forefathers. Today, let us salute those warriors, leaders, and freedom fighters who did a remarkable job to gift us a free and beloved country. We are now an independent, fairly respected and progressive nation of this world. We are advanced in technology, military, arts and architecture. We have an advanced agriculture system. We are self-sufficient in many resources. Today, we play an important role in all important international affairs around the world. Our youth are leading the world in technology, engineering, and medicine. In fact, since the day of independence to this day, we have much developed in every sphere of life. There are still a lot of challenges and hardships in our way. Our independence needs more sacrifices and struggles to fulfill the dreams of a powerful and popular India. We have to fight against poverty, illiteracy, youth unemployment, terrorism, pollution, overpopulation, and the COVID-19 pandemic threat that has already created global health crisis and has had a deep impact on our lives. Being a citizen of an independent country brings about a huge responsibility on our shoulders. We shall be failing in imparting our responsibilities as citizens of an independent nation if we don't dedicate ourselves to the service of the nation. We must work day and night for the progress and welfare of our country. हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सदैव देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। स्वयं को शिक्षित और शक्ति संपन्न बनाए रखना चाहिए। We must utilize our today for a better tomorrow.
Let's all heed and work towards the clarion call given by our respected Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, by using these challenging times to become Atmanirbhar and also contributing towards his ambitious plans like Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat Mission, Skill India, and many more. Let's make commitment afresh. Let's unite and work hard. Let's forget the differences of color, creed, and caste and stand for the broader aims of progress, prosperity, peace, and justice throughout our land. Let's join our hands in a common endeavor with a strong belief that better days are ahead of us. We can tackle and resolve all problems if we remain united, resolute, responsible, and above all patriotic. जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for being such an impactful leader and motivating our students to strive for success daily. We feel honored to have Mr. Vijay Sampla as the honorable chief guest amongst us. He needs no introduction as he has made all of us proud with his distinguished work in numerous capacities. We would now request him to share his distinct vision and illuminating ideas with us. नमस्कार। मंचासीन संस्था के संस्थापक वीपी टंडन जी और कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा श्रीमती वंदना टंडन जी व सभी स्कूल के अध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थी बच्चों, आज हम 15 अगस्त के इस पावन बेला पर आपके समक्ष हमें आने का मौका मिला है और आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर किए हैं और इस 75 वर्षों में देश ने बहुत सारे आयाम स्थापित किए हैं और इसमें सभी देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है और उस सारे योगदान में उन सबका देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने बलिदान देके इस आज़ादी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज उन सब के कारण इस हम खुशगवार माहौल में हम अपना सांस ले रहे हैं। आज हमारे पास सुख सुविधाएं सब कुछ हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उन्हीं लोगों के बलिदान हैं, इसमें भगत सिंह जी है, लाला लाजपत राय जी है। अगर मैं नाम लेने गिनूँ तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए किया। अब हमें ये सोचना ज़रूरी है कि उन्होंने अपना जीवन बार कर हम सब के लिए ये माहौल उत्पन्न किया, ये ऐसा माहौल, खुशगवार माहौल पैदा किया कि हम आज़ादी के साथ इस देश में सांस लें। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जहाँ हम उनको याद करते हैं वहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सोचा कि उनके लिए क्या दे के जाएं, क्या छोड़ के जाएं, क्या विरासत में दे के जाएं। आज उनकी वीर गाथाएं हमारे लिए बच्चों को प्रेरणा देती हैं, मगर आज हमें ये भी सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या छोड़ के जाएं। आज जो पर्यावरण है वो दूषित हो चुका है, पानी पीने का लिए जो अमृत है वो दूषित हो चुका है और आने वाली नस्लें कैसी होंगी इसका कई बार सोचकर भी हमें मन में एक कंपन सी चढ़ती है कि जिस तरह से प्रदूषण आ गया है, जिस तरह से हमारे आचार व्यवहार और हमारी स्वार्थ के जीवन में हम जी रहे हैं। और अगर वही जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया
वो भी अपने स्वार्थ की ज़िंदगी जीते तो शायद अपनी सुख सुविधाएं आपसे ज़्यादा लेकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते थे, मगर उनके लिए आने वाली नस्ल उनके लिए जो थी उसके लिए कुछ करना चाहते थे। तो हम सब उनकी इस आज़ादी दिवस पर ये सोचें कि हमने देश के लिए क्या करना है, देश को क्या देना है, स्वच्छ माहौल देना है, एक करप्शन से दूर रहकर हमने अपना जीवन जो लोगों के लिए एक अच्छे आयाम पैदा करें, एक प्रदूषित वातावरण को ठीक करें, पर्यावरण को ठीक करें और साथ में जो आई सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं उनसे भी निपटने के लिए हम आगे निपटें भी और आगे आने वाले समाज को हम कुछ सेध दें, ताकि इस आज़ादी का महत्व क्या है, तभी कि उन्होंने देश के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने किया, भाव जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हम अपना कर्तव्य क्या निभाएं, इसके ऊपर अपना जो समय हमें जो व्यतीत करना चाहिए। और मैं इसी आशा के साथ, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये सब हम जानते हैं, मगर वो भविष्य में आगे बढ़े और आगे बढ़कर खुद अपने साथियों का जीवन अच्छा बनाएं और आगे बढ़कर अपने आने वाली नस्लों के लिए भी अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आज 75वीं देश की आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for taking out precious time from your busy schedule and sharing your inspiring thoughts and words. तो आइए स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा के प्रभाव हमारे वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कठिन तपस्या और संघर्ष को जागृत करते हुए एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साहस, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, त्याग और बहादुरी की मिसाल। सन 1907 को जन्मे भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ वे निरंतर शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से लड़ते रहे। निसंदेह भगत सिंह का नाम भारत के क्रांतिकारियों के सूची में उच्च शिखर पर विद्यमान है। उन्होंने केवल जीवित रहते ही नहीं, अपितु शहीद होने के बाद भी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अपने शौर्य से अनेक नौजवानों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। सुखदेव जी, इनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। सुखदेव थापर ने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। इन्होंने भगत सिंह को मार्गदर्शन दिखाया था। इन्होंने ही लाला लाजपत राय जी से मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इनके बलिदान को आज भी Our Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Azadi Ka Amrit Mahotsav by flagging off Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad on 12th March 2021. This celebration started 75 weeks before our 75th anniversary of independence and will end on 15th August 2023. Hey Shrishti, hi. Well, what are you doing? Hi, don't you know that our Independence Day is coming? So I was singing the Rashtragan poem. Do you know that Rabindranath Tagore ji composed it in the year 1911? And also, when someone hears it, it's time to show the respect of the country. And also, do you know that there is great news? Modi ji has organized a website so all can sing the Rashtragan together and it will broadcast on the Independence Day. Yes, I know about it. And I have also done this. I feel proud to be an Indian. Same. And do you know that what is special about this Independence Day? Yeah, I know about it. This is the 75th year of our independence. And our respected Prime Minister Modi ji have made this year more special by organizing the Azadi Ka Amrit Mahotsav.
Okay, so I have heard many stories from my grandmother about the sadness of the people there. उनके दुख के बारे में and Britishers नाम के क्या जुल्म किए थे. I'm sure they used to cry when they did this. But what is this Azadi Ka Amrit Mahotsav? Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is a series of events to be organized by the Indian government and our Prime Minister Modi ji to celebrate and commemorate the 75th year of our independence. Wow, that sounds interesting. And do you know what is the reason because of the independence? Do you know? Yes, I know about it. It was because of the freedom fighters that struggled very much for us. Yes, it is because of the freedom fighters. And I know one of the bravest freedom fighters, that was Gandhiji or Babu. Gandhiji always used that cloth so he can make khadi, and I think everyone should prefer khadi over the western clothes. And he also started a movement called Dandi March, and he always chose the path of non-violence and peace. Yes, I agree with you. And I also remember the stories that I have heard from my grandfather about the 3 brave and great freedom fighters. Who can they be? They are Bhagat Singh ji, Rajguru ji and Sukhdev ji. I have heard about Bhagat Singh ji, but who are the 2 others? Bhagat Singh ji, Sukhdev ji and Rajguru ji were 3 friends who were very brave and dedicated to make our India free from the British rule. उनकी सोच गांधी जी की सोच के साथ मेल बिल्कुल नहीं खाती थी। गांधी जी अहिंसा के पथ पर चलते थे और वह तीनों हिंसा के पथ पर चलते। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वे किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं या किसी को मारना चाहते हैं। बस उनका ये कहना था कि यदि वे सिर्फ बात करके और अहिंसा से रहेंगे तो वे कभी भी अपने देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। Wow, they have become so many sacrifices and tolerated so many struggles. I salute them. I also salute them and I feel proud to be a citizen of India where people like them were, who gave their lives to make our India free. Yes, right. And do you know about one of the most intelligent freedom fighters that I know? He was Dr. Bhimrao Ambedkar ji. Yes, I know about him. Go ahead. Dr. Bhimrao Ambedkar ji was a great and intelligent freedom fighter who worked for Dalits upliftment so that they can live equally and completely agree with the other caste people. Yes, right. And he also drafted the constitution and he wrote many rules of the constitution. And do you know a fact that India's constitution is the longest written constitution in the world internationally? Yeah, I know about it. What is this? Local for vocal? Hey Shishti, do you know about this? Yes. Do you know about vocal for local? I said now, I don't know about it. But do you know about Atmanirbhar Bharat? Yeah, I know about it. मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें अपने देश की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि विदेशी चीजें, क्योंकि हम ये करके हम विदेशी लोगों को बढ़ावा देते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनके अपने देश की चीजों से इस्तेमाल करनी चाहिए। Yes. Do you remember that interview in which Modi ji announced that everyone should follow vocal for local, and then that the things that are manufactured in our country, that is India, we will only use it and not the foreign things, right? Like Britishers also did this. Britishers ने हमारे इंडिया से सामान लिया था और अपने देश में उस पे लेबल लगाया था अपने देश का, and then they came again to India and then they sold it in higher prices. But if you know that if we buy our things, that it will 3 benefits. First is that it will give our people employment. Second, it will higher our economy. And third, that we will move one more step ahead to our independence or Atmanirbhar Bharat. Yeah, I completely agree with you. Why are you laughing, Maya? Well, I was just thinking about the achievements of India in these 5 years. I know, man. You know about it? So Yes. go ahead. Okay, so one of them was that as soon as we got independent, after only 1 year, that is in
1948, we got a gold medal in Olympics. In 1948 in London, the sport was hockey. And after 75 years, we again won in hockey in Tokyo Olympics. Yes, you are completely right. And Shri, do you know about this? That India is one of the countries who launched a nuclear submarine called INS Arihant. Yeah, I agree. भारत ने मंगल ग्रह का मिशन एक ही बारी में पूर्णतः सफल कर लिया था। हमारा देश महान है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। Yes, and I'm very happy to be a citizen of a country where these achievements happen. And I hope that this will continue to happen, right? Yes. Now, the Prime Minister tied 5 pillars that are achievements at 75, ideas, action, resolve, and freedom struggles at 75 as guidance for as moving forward, keeping the dreams and duties as inspiration. बने पहिए प्रगति के रथ के, सबसे आगे बढ़ते जाएं, कर दे रोशन नाम जहां में, देश का अपने मान बढ़ाए, आजादी की वर्षगांठ की छटा निराली बढ़ती जाए, खुशहाली के फूल हो बिखरे, खुशबू से चमन महकाए, आओ आजादी दिवस मनाएं। खुशबू से चमन महकाए, आओ आजादी दिवस मनाएं। खुशबू से चमन महकाए, आओ आजादी दिवस। This nectar of freedom we have got after so many effort and unlimited sacrifices. Patriotic songs foster in us a sense of belongingness to our beloved nation. They showcase our love and respect towards our country. They also help us to express our devotion and fill our minds with love for our country. So to show our deep devotion, I would like to invite the school choir for a splendid and healing musical treat put by the school choir of KMS. Here they come with a patriotic song to our motherland.
Wow, they just blew us with their mesmerizing performance. या वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो. On this day, we remember those who laid down their lives to give us freedom. Although whatever we'll do, it will be never enough to express our gratitude to those great freedom fighters. To perform from home is a tough task for anybody, as people would be looking closely. A good posture, a smile, a nice camera angle, and a judicious use of hand movements is a must, and it becomes critical to lure the audience attention till the end. Yet, special children of Kamal Model Senior Secondary School have tried their best to pay a tribute to them. It took considerable effort on their part to prepare their acts. So kindly be generous in showing your support and love to the special children of KMS. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे. जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. जहाँ से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है. भारत हमको जहाँ से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है. सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग. बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग. धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है. नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला. वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं चाहूँगा मैं याद रखूँ, मैं चाहूँगा मैं याद रखूँ. ऐ वतन
That was such a touching performance. You surely are the real troopers among us all. Hats off to you. Freedom is never given, it is won. Gandhiji said, my nationalism, fierce though it is not exclusive, is not devised to harm any nation or individual. Coming up next, मेरी आज़ादी मेरी ज़ुबानी नुक्कड़ नाटक। इस नाटक के द्वारा छात्र परस्पर आज़ादी को लेकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे। So here come the students of class 3rd, 4th and 5th with My Freedom is My Word to steal your hearts. Hold your breath and welcome them with a loud round of applause. आजादी आजादी क्या है आजादी? किसने दी है आजादी? कहाँ से है आजादी? तुम्हारे कपड़े पहनने की आजादी, तुम्हारे बोलने की आजादी, तुम्हारे घूमने फिरने की आजादी। भारत के वीरों ने दिलाई अपनी जान की कीमत चुकाई, कितने ही संघर्षों का ये परिणाम, तब जाकर मिले अधिकार तमाम। अधिकार अधिकार अधिकार। नमस्कार, मैं तनुष्का आपका स्वागत करती हूँ स्टार न्यूज़ पर। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी मैदान में। यहाँ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं इनके लिए आजादी क्या है। बेटा, तुम्हारे लिए आजादी क्या है? मेरे लिए खेलने कूदने की आजादी है और मेरे लिए मम्मी अकेले घूमने की आजादी। ओ अच्छा। चने गरम साथ चने लोगे, चने गरम चने गरम। इस बच्चे की आजादी कहाँ गई? आजादी का यही नाम बस है मोटा सरेआम। आजादी का यही नाम बस है मोटा सरेआम। हमारा नेता कैसा हो? रोहित शर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? रोहित शर्मा जैसा हो। नमस्कार भाई बहनों, मैं आपका नेता रोहन अस्ताना, आपका नेता जाना पहचाना। मैंने अपने क्षेत्रों में बहुत से अच्छे कार्य करवाए हैं, जैसे मैंने 24 घंटे बिजली पहुंचाई। मम्मी, फिर से लाइट चली गई। मैंने महिलाओं को शिक्षा दिलवाई। पढ़ाई छोड़ो और जाकर घर का काम करो। विदेशों जैसी सड़कें बनवाई। क्या तुम्हें पता चला? चन्नू फिर से सड़क के गड्ढे में गिर गया। इस प्रकार हमने देखा कि हर व्यक्ति के लिए उसकी आजादी के मान्य ही अलग अलग हैं। हमारी आजादी ने हमें कई अधिकारों को पाने में मदद की है, जैसे समानता का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए स्वयं प्रयास करना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी नागरिक इन अधिकारों को हमेशा यूं ही पाएं। अधिकार 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 अधिकार। आओ मनाएं आजादी, आओ मनाएं आजादी, आओ मनाएं आजादी, आओ मनाएं आजादी। समझो इसका मोल भी, ये तो है
Our freedom means respecting the freedom of all, and this message was so aptly conveyed through the street play. That was a real class act presented in an artistic manner. Well done, all of you. The diversity of India, of our civilization, is actually a thing of beauty, which is something we are extremely proud of. On this day, we remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of an ever-shining India. Friends, Independence Day celebrations cannot be complete without tapping our feet on our very own patriotic songs. Thus, to inculcate patriotism among our kids, the students of 3rd, 4th and 5th are here with a mesmerizing dance on the song Teri Mitti Mein Mil Jawa. Let's put our hands together to welcome these young dancers. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। This was truly a breathtaking performance by students of 3rd, 4th and 5th. The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance. So upcoming next is a glimpse of talent and hard work put in by the students of KMS to commemorate this 75th Independence Day. That was an amazing presentation reminding us of those great freedom leaders who fought for our freedom and laid down their lives without a single frown on their face.
but end this event without expressing our gratitude to one and all who have provided invaluable assistance in the planning and execution of this event. Unfortunately, at the end of the day, we need to say goodbye. No matter we don't want to. Yes, it's time to end this awesome day and say goodbye. But before that, we both, from the core of our hearts, wish you all a happy 15 August. I would like to end this program by saying, बात ये हवाओं को बताए रखना, जहाँ रोशन होगा दिया जलाए रखना, कि ये हिफाजत लहू देकर हमने मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखना। जय हिंद।